Namaste, everyone. Welcome to the Cārvāka podcast. This is your host, Kushalmehra. Obviously, you guys know today's discussion is very important. It's about the coronavirus. What are the do's and don'ts? I have with me Dr. Anupam Singh. Dr. Anupam Singh is an assistant professor of medicine at the Santosh Medical College. He's a physician with a very strong interest in public health. He has worked in the United States of America during the swine flu epidemic in 2009, and he has handled swine flu epidemics in India. He's currently a member of an outbreak response committee of the district Ghaziabad, and he's also running a COVID screening camp and isolation ward at his own hospital with his colleagues. So, Dr. Singh, welcome to the podcast, and thanks a lot for actually, taking some time out and coming here to talk to me. Thank you for inviting me. Yes. So, Dr. Singh, let's start with this. Can you first start by giving everyone who's going to be listening to it live right now or going to be listening to it later, can you give us a brief introduction as to what is COVID-19 or the coronavirus and what are its symptoms? So can you start from there, sir? Yeah. Okay. So in around mid-December last year, 2019, a lot of atypical pneumonias started coming up in China, particularly in Wuhan. Doctors there were perplexed about it, that why is it, especially it is harming elderly so much. I mean, the viral pneumonias have typically, fluffy, not very specific pictures on X-ray or symptoms or signs or symptoms, but patients are very breathless and they tend to have bad outcomes, particularly in elderly, this particular pneumonia. People were worried. I mean, it is always difficult to treat viral pneumonias, but they are commonly flu, but it was testing negative for flu as well. So what happened was some scientists, some labs eventually managed to, they sent for flu, the test, the virus came to be negative. They're suspecting viral pneumonias out of the clinical picture. That is relatively easy to test. So they just searched for other viruses and they searched for, there was a virus which was a novel coronavirus. Coronavirus, when I was in MBBS, microbiology में एक chapter था, there was chapter microbiology coronavirus. तो हमारे seniors बोलते थे, this is a minor pathogen, इसको मत पढ़िए, exam में नहीं आएगा. It won't come in the exams. But this is how we handle exams. But this was of this category only, right? So we had this category in China only around 2003, SARS. Okay. The coronavirus also. So now it was a novel coronavirus. It was different from that. So they named the disease COV, coronavirus disease, in 2009, infectious disease in 2019. That is COVID-19 2019. The name of the virus is SARS-CoV-2. So what happened in China around that time was some people suppressed the reports. In authoritarian societies, there is a tendency. Clinicians actually worked hard. They tried to, the labs worked hard. The people are genuinely hardworking in China. So they tried to bring about everything, the labs to notice to the authorities, but the authorities suppressed it. Our economy will go down. And okay, they were hoping that it was contained, which is a natural thing. But in authoritarian societies, no one wants to report to the boss. So this was an issue. Around the same time, in China, this was a new lunar year. It is like, for new year for them. So a lot of Chinese were visiting places like Italy around the same time for, holidays. So a lot of people were visiting around and government didn't, inform. Generally what happens for example, in Kerala, when you had a Nipah virus outbreaks, it was promptly identified. Kerala handled it pretty well last year or so. But in China, there was, absolute, for first 1 month, it was free for all. People were, confused. Then around mid-Jan, the president himself took, people were dying in large amounts. The president himself took, everything in his hands. And classically, the first day, it is called 31st December 2019 is the day of the outbreak of Wuhan. And then WHO, they eventually brought note the whole thing into, advised WHO, informed WHO about this on the, went the whole hog with the data in
at the end of Jan. So some time was lost. So some people blame China for it. I personally think their culture was obviously spread. The culture of probably hiding things, not revealing things, was responsible for spread of the virus in initial phases. But again, the same culture is responsible for suppressing things, because they have been able to manage. It has been 104 days, and now China has no domestic cases of its own. Though people are saying many things, I don't personally believe in conspiracy theories. So I believe that China was able to contain it in some fashion. Pretty aggressive social surveillance strategy, which you would call Orwellian in a traditional sense, marking people, tagging people. Probably not possible in India to that extent. So yes, so this was what was happening in China. Now, so this is what the disease. I have given you a broad outline, and then things went. The people who were closely associated with Chinese, for example, Italy, where the Chinese went for holidays, and they had projects running, and Iran. So these places, the virus started proliferating a lot. Italy culture of Japan is also near to the China, though they have some environment. And then South Korea was also close to China, but they were able to contain it well, contrast from say Italy or Iran. Iran is also a site. Other thing is, some people say there's a racial theory about this. But in Iran, there has been a pretty severe epidemic as well. The data is not that out as yet. For example, almost 255 Indians there who has gone for a Shia religious festival. Probably they are also affected. So so it is a serious disease. I think there is a race factor, but it is not very predominant. There is some, but main thing is how much contacts, at which level you were exerting precautions, and etc. So that is it. I mean, apart from it, this disease is dangerous from normal flu. Should I talk more about it? Sure, please go ahead. So this disease is different from conventional flu in that fashion that it has a high transmissibility rate. We use a number in epidemiology called basic reproduction and effective reproduction rate. It has an R naught around 3 or 4. So it can spread to that many people in a potentially in a naive population. So so it is almost twice that of influenza. But what is bad about it, that influenza kills like 1 or 2% people in elderly age groups, where the case fatality rate, the people who die from it rises to 15 to 20% in this disease, the COVID-19. So that makes it very dangerous. So transmissibility and potential to kill. Plus, we have, it's a new virus. It is taking immunity to develop. The good news is that once you develop an immunity, you are able to, tide over it. Most likely, they are, saying that it will not develop again, but sometimes these viruses mutate, so they come in other forms as well. So at this point, people are saying, for example, China has relatively tided over it. So unless the virus mutate, people are hoping that it will not come back again, or we'll have a vaccine by that time. For example, flu also mutates, but we try to have different strains and different cover for those mutations by vaccine. So right now there's no vaccine, there's no effective treatment, because we cannot run trials because there are so few patients, or that everything is happening so fast. Traditionally, a trial takes at least 1 or 2 years. So everything is happening so fast, it is like a train running into you. So people are taking all sorts of things. I mean, I can begrudge them. Good should not, perfect should not be an enemy of the good. People can try things, but at the same time they shouldn't panic. So this is the thing. Now this virus spreads by droplet. What does droplet mean? You cough, and there are secretions, there are droplets, and they generally travel till 1.5 meters, 2 meters. So, and they can remain in air around 4 to 5 hours.
So obviously a person who is in vicinity for till like in 2 meters for almost more than 15 minutes, so he is at danger. So this we call a casual contact. A close contact is a family member who lives with this person for long, like a family member. So these people will obviously be at higher risk. Other thing I forgot to tell you about Wuhan. In Wuhan, what happened was, which is possible. I see it potentially happening in India as well. A lot of people got this infection from hospital. What happened when panic? Almost 30 to 40% people got it from the hospital. What had happened is the hospital became a wrecking ball. So why did it become a wrecking ball? Because normal patients were mixing with these patients, fever and respiratory infection patients, fever and cough patients, and then they infected them all. And the doctors, they had not been provided equipment. They developed it, they gave it to their patients, and the whole thing became uncontrollable, unmanageable. The city had to be under lockdown. So the thing is, if you panic a lot, so now if you have heard the address, the recommendations that you keep apart from, isolate for minor symptoms. In US, the privacy is a big affair. In telehealth, so HIPAA, there are guidelines. You cannot, so telemedicine was looked down upon there. They didn't take off, but now even HIPAA has been waived for some time. People are doing telehealth, teleconsults in US also. So to keep mild illnesses at home only, right? The elderly should come out. But all this was not, so you can tell China, but China effectively has handled this epidemic well once the president came into the picture. But they were also learning about these things, and they didn't know that this virus, and typically it's a human tendency to not take things seriously until it comes very hard at you, or fast at you. So this is what it is about COVID-19. Initially, what I wanted to say. All right. So, doctor, so now let's go to the second part. What are the possible precautions? So let's go step by step. So the first thing was we set the ground. We understand what COVID-19 is. Now let us talk about the precautions. So what are the correct precautions that we are all supposed to take as individual human beings, or as a family, or as a group of people? So can you put it down in this manner? Me as an individual, me as a unit member of a family, and me maybe as an entrepreneur or a shopkeeper or as a businessman or as a person who has a job. So can you explain to us what kind of precautions we're supposed to take? Okay, firstly, I forgot to tell you one thing. Let me tell you about the symptoms of the COVID. Generally your symptom, because I've seen many videos on WhatsApp, which is a good medium for knowledge, but again it can if you're not smart enough, you can land up in fake news. You can end up trusting fake news as what matters. So generally fever is common. Fever is eventually there in many patients, around 80% of these patients. Cough will develop around like day 4 or day 5. So the patient will start. So initially they will fever and body aches. Around 4 or 5 days, people will have cough. Then in 2-3 days, breathlessness will develop. The thing I'm trying to make about it, runny nose, throat pain. These are not very common. They are there in 15% of the patient. There's no definite formula, but in 15% of the patients only these are there. If you have fever, a runny nose, and throat pain, they are more likely to be a conventional flu, which is the season this is currently going on in Delhi or Mumbai, with rains and changes in weather that is happening. So this is so you can tell like fever and cough, the flu may be hota hai, right? But then breathlessness is a thing that tilts matter, but you will know only about day 7. So until that time, the incubation period is long, and the person is spreading the virus in asymptomatic phase. What makes this COVID dangerous is, unlike say MERS, which had again a high transmissibility rate, or flu, people take a while to get symptomatic, and in that duration, in that time, people spread things. So asymptomatic
career makes things bad. Let me also tell you about the natural history of COVID, as in how does it behave. Almost 80 people. So if you have 100 people will have COVID, since there is no natural immunity, everyone will develop a disease. Almost 80 to 85% people will have a mild self-limiting infection. I mean, they might have fever, chills, but they'll get better on their own. But everyone will have that virus, and they might spread. And then cough. Then 15% of the people, around 15%, 10 to 15% of the people will get hospitalized. They will have high-grade fever, cough. They might need oxygen. And then 5%, they will need ventilators. So this is a big thing. I mean, the disease which is needing ventilator in 5% of patients spreads fast, spreads to asymptomatic people. So that becomes an ideal bioweapon in some sorts, right? You don't know that so we have all read about ideal poison. You cannot detect it. So, and by the time you detect it, so it is spreading a lot. So it becomes a sort of a bioweapon. So 5% people will develop this, need ventilators, and around 1% or 2% will die. Most in elderly, the death rate is almost as high as 14 to 15%. So this is a big number because your capacity would be overwhelmed, and that is the serious thing. So and that is what they're calling. Okay, I'll deal it later, but these are the briefly signs and symptoms I want your audience to hear. Okay, now you were talking about the precautions. Yeah. So now we don't have a vaccine, we don't have a cure. So precaution is the only thing which we can take. In medicine, what we are doing is we are just किसी को डेंगू हो जाता है, तो डेंगू का कोई इलाज तो है नहीं, वायरल इन्फेक्शंस का, तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, प्लेटलेट कम होता है, प्लेटलेट चढ़ाते हैं, ज़्यादा कम हो जाता है, फीवर करता है, फीवर की दवाइयाँ देते हैं, बस हम ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं डेंगू की वैक्सीन। तो उसी तरह ये भी वायरल इन्फेक्शन है। तो अभी फॉर्चुनेटली डेंगू मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, ऐसा नहीं खांसने से स्प्रेड होता है, और इतना मोर्टेलिटी भी नहीं है। तो इसी तरह ये भी वायरस वैक्सीन नहीं बनी, क्योर भी नहीं है कोई, अभी कोशिश लोग कर रहे हैं। तो इसमें भी प्रिकॉशंस हैं, एक तो कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको बोला जाता है कि एटलीस्ट गैदरिंग नहीं कीजिए, 2 मीटर से ज़्यादा ड्रॉपलेट अगर फैल रहा है 2 मीटर तक खांसने से, तो 2 मीटर से कम दूर रहें। अगर आपको खांसी हो रही है, चाहे बशर्ते आपको फ्लू लग रहा हो, आपको फीवर वगैरह हो, क्या पता वो उसका पहला स्टेज हो। टॉम हैंक्स हैड दिस fever chills. He went to Australia. Tom Hanks, this fever. One day back, he got his partner, Rita Wilson, tested, and they discovered positive. So, तो ये चीज है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो आप प्रिकॉशंस लें। सारे मास्क नहीं पहने, हो सकता है सारे लोग मास्क पहनने की जरूरत पड़े जब ट्रांसमिशन स्टेज में चला जाए, जब सारे लोगों को आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। हाँ, अगर आपको खुद को बुखार, नजला जुकाम है तो आप पहने, ये जरूरी। हॉस्पिटल में जाए जहाँ पे लगे कि बहुत सारे बीमार मरीज, तो बिल्कुल पहने मास्क। क्राउडेड एरियाज में जाए तो मास्क पहन के जाए, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर जगह मास्क पहन के, क्योंकि वो सारे मास्क हेल्थ केयर वर्कर्स भी यूज करेंगे। कभी न कभी अगर आप होर्ड करोगे मास्क, तो वो हेल्थ केयर वर्कर के पास ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको बचाएगा। फिर उसके पास नहीं होगा तो वो आपको स्प्रेड कर देगा। We are in it all together, particularly because Wuhan the hospital became a wrecking ball. 40% of the people got infection. They tracked the genotype, वगैरह सब कुछ track किया। I'm forgetting the name of the study. There's a good evidence that hospital is a potential big site. You should be careful there. Okay. So ये है, तो social distancing हो गई, hand washing की चीज ठीक है, हमने खांस दिया, कई बार हाथ पे लगा के खांसा हमने, कई बार ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, तो हाथ लगा के हमने ऐसे यूज किया, तो उसके कारण जो है क्या बोलते हैं, स्प्रेड हो गया। मैंने किया, उसके किसी से हाथ मिला लिया, तो ये हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सो दैट इज व्हाई यू हैव टू कॉफ ऑन योर एल्बोज। ये बताया भी गया आज बड़े सारे। सो प्रेफरेबली ये आप यूज कीजिए, क्योंकि यही हाथ आप यहाँ पे भी लगाओगे, ये भी यहाँ पे जाएंगे। सो सम पीपल टेल कि ठीक है मास्क क्यों लगाते हो, तो कई लोग बोलते हैं कि चलो हमें नाक तो नहीं छू रहा, मैं मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए, यहाँ के ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, सांस लेने में दिक्कत नोज ब्रिज पे होना चाहिए, इसलिए
क्योंकि यहाँ कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। बहुत लोग मास्क लगाने के ये आप, मैं चाहता हूँ यू शुड शेयर हाउ मास्क आर, यू नो, इफ यू कैन, आई कैन, यू नो, transmit 3 messages, so people should know how to wear masks. They should know how to do hand rubs. आप सोप वाटर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली करें. टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट. इवन मास्क का वियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन, भाई आपने सबसे अच्छे क्वालिटी की गाड़ी खरीद ली, लेकिन उसको ड्राइविंग नहीं करना आता तो उसे ऐसे ही ठोक दोगे आप, तो वही वाली बात है ना. तो मैं कम से कम आप ये करें कि मास्क कैसे है, हैंड रब कैसे है, और आइसोलेट करें. डोंट बी कनिका कपूर, है ना. आप सोने दी नहीं हो और दुनिया पीतल दी तो नहीं है बॉस, है ना. डोंट बी कनिका कपूर, है ना. तो बिकॉज यू नो ये तो कर्मा है, घूम के आप पे आएगा. कर्मा है, तुम भी नहीं बचोगे. ये बीमारी में है तो सारे हैं, वही डार्क नाइट की तरह वही है. स्मार्ट मतलब आप सबको साथ लेके चलना है, चाहे दुश्मन भी है मेरा, चाहे आपको उस मजलिस से नफरत भी है. जैसे ट्विटर पे चलते रहते हैं राइट लेफ्ट विंग वॉर, लेकिन इसमें तो सारे साथ हैं भैया. आइडियाज के लिए लोग मर जाते हैं, लेकिन इसमें तो लोग मरेंगे, तुम ही नहीं मरोगे, तुम्हारे साथ भी 10 लोग मरेंगे. Yes, that is so true. Okay, so doctor, now let us get into the most crucial subject. जो यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ट्विटर पे एक बाढ़ सी आई हुई है. जैसे होता है ना, जब हमारे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का इशू होता है तो उस समय ट्विटर पे सब लोग फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट होते हैं. जब बजट आता है तो लोग ट्विटर पे सब इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं. आजकल लोग सब लोग वायरोलॉजिस्ट हो गए हैं ट्विटर पे, और सब लोग स्टडी शेयर कर रहे हैं. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल एक वर्ड बार बार हम लोग सुनते जा रहे हैं, टेस्ट टेस्ट टेस्ट. और एक बहुत मेजर क्रिटिसिज्म है इस समय इंडियन गवर्नमेंट का. मैं कोई सेक्शन का नाम लेना चाहता, बिकॉज लाइक यू सेड, you know, virus does not discriminate between your religion and your political affiliation. The virus doesn't care. It's going to infect all of us. So there is this thing that is going on online that they say कि हम testing नहीं कर रहे हैं, we are not testing sufficiently. The testing methodology that has been presented by the ICMR and the government of India, and whatever press conferences and daily briefings that we are getting, apparently it is said that it is not enough. The testing methodology is totally wrong. We are already far down the deep end, and the government is just not doing the right thing. So what are your comments as a medical expert on this entire process? Because you've been very vocal about it on Twitter, and that's when I actually started reading what you were saying. It was through this testing thing, and I was like, interesting points raise kare. So what do you think is going on right now on the testing scenario, on the testing front? मैं लोगों को, मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं दूसरी बीमारियों के साथ. सपोज मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे छाती में दर्द हो रहा है, तो मैंने एंजियोग्राफी करा ली. या बहुत लोग लैब रिपोर्ट्स के साथ आते हैं, यू नो, सभी ने लैब रिपोर्ट्स अपने आप कराए होते हैं, करा ली, और मैंने उसकी शुगर की जांच करा ली, बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं करा, मैं खुद खा के कंट्रोल कर लूँगा. It's not what you test, it is what you do with the test, right? मुझे चेंज नहीं कराना, मुझे वो चेक, what do you do with the test? Test, very important. It is always good to have information, but more important what you do with the test. अभी तक क्या हुआ, और ये टेस्ट वर्ड कहाँ से आया, ये बात कर रहे हैं. अभी तक, लाइक आई टोल्ड यू, अभी तक हमारे पास क्या है, मैं आपको फिर से डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा. मरीज कोरोना वायरस का कोई है या सस्पेक्ट है, तो हमने डिस्कस किया कि पहले दिन बुखार खांसी जैसा या हल्का बुखार रहेगा. कई बार 80% लोगों को बिल्कुल ही माइल्ड सा रहेगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा शायद. 5 दिन के आसपास कॉफ होगा थोड़ा बहुत, 80% लोगों को वो भी हो सकता है पता ना चले, है ना. और उसके बाद सांस वांस फूलेगी. 10-15% लोगों में तो ज़्यादा फूलेगी. अब ये परेशानी ये है कि इसका कोई इलाज तो है नहीं. 14 दिन तक वायरस सिक्रीट तो होगा ही आपसे. इलाज है अपने घर पे बैठना, और कुछ ज़्यादा हो तो हॉस्पिटल पे जाना. तो ICMR की अभी स्ट्रैटेजी है कि जो बाहर से आए सारे लोग हैं, ट्रैवल हिस्ट्री, हालांकि पहले लिमिटेड कंट्रीज में थी, तो ICMR की अभी स्ट्रैटेजी है, अगर आप बाहर से आए हो तो भाई साहब घर में बैठ, ठीक है, और उसके बाद घर में बैठ जाओ, 14 दिन बैठो, दिमाग मत खराब करो, क्योंकि कुछ इलाज नहीं है. हॉस्पिटल में जाओगे तो वुहान बना दोगे उस हॉस्पिटल को तुम, क्योंकि हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों के पास, इंडिया ऐसी पुअर कंट्री है, प्रिकॉशन उतने फैसिलिटीज नहीं है. अब तुम इस बारे में रो सकते हो, हंस सकते हो, लेकिन इंडिया गरीब कंट्री है. सरकारी हॉस्पिटल ऐसे ही है, रातों रात नहीं बन जाएंगे. इंडिया अमेरिका नहीं, अमेरिका में भी मास्क और वेंटिलेटर की शॉर्टेज पड़ी हुई है. अमेरिका के मेरे बड़े सारे दोस्त यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, यार मुझे दिलवा दे,
मेरे एक ही सप्लाई मिला है, दिस इज व्हाट इट इज सीन। सो जाओगे तो वहीं तो क्राउड करोगे, टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो डॉक्टर से ही मिलने जाओगे, भले सिम्टम नहीं आ रहे हो आपको। वहां जाओगे तो क्या होगा, राइट, है ना, फिर तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो एक तो ये चांसेस है राइट टेस्ट करने का। दूसरी सबसे बात है कि ये जो वायरल, जैसे ही ये टेस्ट जो है शुरू में नेगेटिव आता है, क्योंकि वायरस का लोड धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो इस Okay. वायरस की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मैं बताना चाहता हूँ। I want to tell you about this. So this virus rises slowly. Initially, patients do secrete, but in very small amounts. Sometimes that test might be negative, और threshold जो है ना वो क्रॉस नहीं हो रहा। Then it peaks in the middle, and then even with higher disease severity again goes down. अपने काम करके वो निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज तरह, लेकिन तो मैक्सिमम पॉजिटिविटी तो जब सिम्टोमेटिक होगा तभी होगा। तो अभी ICMR क्या बोलता है, आप 14 दिन घर पे रहो, सिम्टम्स नहीं है तो सिम्टम आने का इंतजार करो, 14 दिन में तो अपने आप आपकी वायरस शेडिंग कम हो जाएगी। ओके, ठीक है। ICMR की टेस्टिंग स्ट्रेटजी में देयर टू वन और टू पोटेंशियल, और सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आप जो है मतलब सारे कॉन्टैक्ट्स को, एक तो ये सारे ट्रैवलर्स को बोल रहा है या उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी बोल रहा है, उसके कोविड-19 के, जब मान लो कोई पॉजिटिव आ गया तो उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को बोल रहा है, जो 2 घंटे जो उसके 2 मीटर के अंदर रहे हैं, बात करेंगे, वो उसको भी तो ट्रांसमिट कर सकता है कि भैया आप रहो, सिम्टम बने, क्योंकि इलाज तो यही है, कोई ऐसी दवाई है नहीं, डॉक्टर आप हॉस्पिटल नहीं तो विजिट करोगे। प्लस शुरू में टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो आप क्या करोगे, जाके बाहर घूमने लगोगे, फॉल्स कॉन्फिडेंस आएगा। लोग तो पता होते हुए भी ट्रैवल हिस्ट्री घूम रहे हैं। Yes. If you see the images right now in Chicago, they have to install an army, पुलिस वहां बैठी हुई है। ये अमेरिका की बात है जहाँ पे तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ कनिका कपूर है। तो पॉइंट ये है कि भैया कि ऐसे बड़े सारे अपने लोगों को बेबी डॉल समझते हैं लोग अपने आप को। तो जब ऐसा है तो 14 दिन तो घर में बैठो भाई, इलाज तो यही है। हाँ, क्वेश्चन तीसरा ये है जो ICMR के में एक दो झोल है इसमें। मैं पर्सनली अभी की स्ट्रैटेजी, इट्स एन इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी, पहले सिर्फ ट्रैवलर हिस्ट्री में था, अब कॉन्टैक्ट को भी घर में बैठने बोल रहे हैं कि भाई आइसोलेट तुम हो जाओ, कि कुछ अजीब किस्म के निमोनिया, क्या पता, सही बात है, कनिका कपूर जैसे बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे लोग तो क्या पता ट्रांसमिट तो ऑलरेडी हो गया होगा, राइट, है ना, कुछ ना कुछ कम्युनिटी ट्रांसमिशन डेफिनेटली हुआ है। बेस्ट स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी भी आई थिंक 50% लोग जो है निकल गए हैं और उनको हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बाय बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी। तो डॉक्टर्स को उन्होंने उतने हाथ खुले नहीं छोड़े अभी तक, हालांकि 4-5 दिन पहले इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की। डॉक्टर्स को इस पे शक हो रहा है भैया ये वायरल निमोनिया है, ये कोविड हो सकता है, उन्होंने टेस्ट नहीं दी है। तो यहाँ तो ICMR की कमी है ना, डॉक्टर्स ये एटिपिकल निमोनियाज जो अभी मेरी जो नॉलेज है वो ICMR उसको चेंज कर रहा है। और दूसरा सबसे ज्यादा रिस्क है फैमिली मेंबर जो 60+ हैं, उसमें भी उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स को आप घर में पड़े हो। मेरे हिसाब से उनमें भी टेस्ट होने चाहिए क्योंकि वो रिस्क उनका हाई है। और ऑब्वियसली अगर आप टेस्ट करने को तैयार हो तो रीटेस्ट भी, टेस्ट मतलब अगर वो टेस्ट को 3 टाइम बोलते हैं और आप इसके पास रिसोर्सेस हैं, अगर डॉक्टर उसके घर पे पहुंच सकता है पैरामेडिक, तो बिल्कुल कराना चाहिए। अदरवाइज एक रिसोर्स पुअर कंट्री के लिए मुझे लगता है ये सही स्ट्रैटेजी है। तो एक तो होगी कि स्ट्रैटेजी के बारे में, आई हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रैटेजी थिंग। Now I want to talk about the criticism of the random samples, which there's a random, what ICMR did कि community transmission में there are 2 ways. Either you go in community and test everyone with fever and cough, that would be the ideal approach, right? Go in. So, but ICMR didn't do this. ICMR chooses a workaround. What happens is typically when people are admitted to the hospitals, some government, some private ones, these people take and viral, they are suspecting. Many cases of the pneumonias are never diagnosed. Okay. हम ट्रीटमेंट चला देते हैं। मेडिसिन इज आर्ट एंड साइंस, 50% ही साइंस है, 50-60% आर्ट साइंस है, 40% आर्ट है, मतलब और बहुत 40% चीजें पता नहीं होती है ना। तो फिर उसमें जब कुछ नहीं मिलता है, फ्लू का भी टेस्ट नेगेटिव आ गया तो लोग बोलते हैं कहीं और नया वायरस तो नहीं चल रहा है। अगर खासकर कोई आउटब्रेक चलता है, ऐसे ही आउटब्रेक पता चलते हैं जो नोन कॉजेज नहीं पता चलते हैं नए डिजीज के। ओके, नहीं, तो अब इसमें क्या उन्होंने किया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन, एक होता है ILI, दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, दैट इज नॉर्मल फीवर, कॉफ एटसेट्रा,
And one thing is SAR, is severe acute respiratory infection. This thing is something acute respiratory infection which needs a hospitalization. Okay. So these people were admitted. They tested negative for influenza. So ICMR took around like 826 or 1,000 such samples, and then they came out to be negative. So ICMR said, and that this was done around 15th of March. So they said कि ठीक है, सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, नहीं तो सीवियर केसेस तो हैं ही. सम केसेस अगर कोविड का कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है, वी वुड हैव सीन समथिंग लाइक इटली, राइट. एंड एटलीस्ट, और मेरा अपना ओपिनियन है, सही बात है, मैंने भी आज की डेट में हॉस्पिटल में गाजियाबाद में रन कर, मैं फ्लू तो देख रहा हूँ, नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, लेकिन आई एम नॉट सीइंग दीज गाइज ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन व्हिच आई सॉ मल्टीपल ऑफ देम एट टाइम ऑफ स्वाइन फ्लू एपिडेमिक्स. So we are fortunate. Acha. Now the thing is, the trick here is, I mean, so what I'm seeing today, severe symptoms, they have happened 10 days back, right? Because as I told you, these symptoms take a while to develop. So ये 10 days back की आज की बात कर रहा हूँ, या लेकिन OPD में 5 दिन पहले हुआ, क्योंकि मैंने बताया था आपको बुखार तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले 3 दिन बुखार के लिए कौन सारे क्रोसिन लेते हैं आप लोग. क्रोसिन होते हैं. अच्छा, कुछ जो है यहाँ कनिका का बेबी डॉल टाइप के लोग जो ट्रैवलर्स हैं, सॉरी वार्न करना चाहूँ, फीवर बचाने के लिए एयरपोर्ट में अपने आप को क्रोसिन लेके डाउन करके वो, ताकि थर्मल स्कैनर से बचे, वो भी कर रहे हैं. यहाँ पे एक दोस्त है मेरा, मतलब वो भी है. तो एनीवे, जस्ट उन्हें क्वारंटाइन. तो इस केस में टेस्ट वालों का भी ये सही है कि यार ये तो सारे भाग रहे हैं, कम्युनिटी में फैल रहे हैं. बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो हो रहा है पोटेंशियली. उनके डाउट्स बिल्कुल ही वैलिड है, लेकिन टेस्ट तो बताओ मुझे, टेस्ट क्या है. तो मेरे जो सजेशंस हैं, और शायद आईसीएमआर ने भी अब चेंज करे, अब मैंडेटरी हमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को सारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो सीएमओ को नोटिफाई करना जरूरी हो गया है. जैसे डेंगू होता है या टीबी होता है, तो सारे डॉक्टर्स पे मैंडेटरी नोटिफिकेशन है कि अगर हम इनको ट्रीट करते हैं और नोटिफाई नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो हमें सजा हो सकती है. खासकर टीबी में, डेंगू में भी नोटिफाई करना जरूरी है. अब उन्होंने बोला है कि कोविड-19 जो भी सांस ज्यादा डिफरेंट चीज है उसको नोटिफाई करना जरूरी है, लेकिन आईसीएमआर अभी तक उस, ऑब्वियसली क्योंकि फिर टेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी, बिकॉज यू गिव मोर डिस्क्रिशन टू द डॉक्स, देन ऑब्वियसली डॉक्स विल टेस्ट how they will know. So in that sense test is a good strategy, but 5 दिन पहले तक तो अभी तक तो नहीं ट्रांसमिशन में आया था, मतलब that I can briefly tell you. And but people are saying that we are hiding all data. अरे भैया, hiding all data कर रहे थे तो इतने लोग मर नहीं रहे होते, डेथ्स तो दिखती हैं. हाँ ठीक है, सर्दी खांसी के इन्फेक्शन छुप गया तो फिर डेथ तो नहीं, डेथ बढ़ जाती. मेरे हॉस्पिटल में पड़े हुए होते लोग, है ना. There would have been a lot of deaths. Some people are saying we are 1 or 2 weeks behind the curve. 2 weeks behind the curve. There was an article by, like, you know, now this was the guy who has done IS in India, and he is a Stanford biomedical informatician. तो उसने इटली और उसके नंबर्स बेसिकली क्या है कि इंडिया में बहुत 7 days पहले 100 थे केसेस, आज की डेट में 200 है. तो डबलिंग टाइम 7 days का है, थोड़ा डबल तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है. और बट इटली और यूएस में वो फिगर्स जो है फास्ट थे, 3 days 2 days का डबलिंग टाइम था, अगर आप वो नंबर्स ट्रैक करो. और ये तो ग्राफ से खेलना हो गया कि यू नो डेथ्स तो नहीं राइज हुए इंडिया में. अमेरिका में आज 10,000 केस हैं, तो नंबर 2 हफ्ते के पहले के फिगर्स चेक कर लो, जो रेट ऑफ ग्रोथ है आर नॉट में सब्सटैंशियल डिफरेंस है. लेकिन ये देखिए, ये क्या है ना, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर आर्गुमेंट, है ना. यू कैन आप उससे पैनिक क्रिएट कर रहा है और टेस्ट बोल दिया, ठीक है, ऐसे शुड टेस्ट व्हाट, है ना. आर यू इंटरेस्टेड इन क्रिटिसिज्म और आर यू इंटरेस्टेड इन सॉल्यूशंस? टेस्ट बताओ किसका टेस्ट करें. आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई. मैंने दो बातें आपको बताई, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एल्डरली को करना चाहिए चेक, बट आप सॉल्यूशंस बताओ ना, क्या सॉल्यूशंस है. उन्होंने बोला हम साउथ कोरिया. पीपल आर, यू नो, ट्विटर पे तो है एवरीथिंग गेट्स पॉलिटिसाइज्ड. आई हैव इवन, मैंने भी इकोनॉमिक्स पे यूज दिया, तो फिर मैं क्या होता हूँ बोलने वाला. आई एम आल्सो यू नो, everyone is a hypocrite in some ways or the form, but then you should be giving solutions, and you know criticism तो उसका होना चाहिए. तो ये जो चीज जो है कि टेस्ट करें किसको. अब साउथ कोरिया में क्या हुआ, जब कम्युनिटी में ट्रांसमिशन, वो बेसिकली साउथ कोरिया ने शुरू में बहुत अच्छी तरह से कंटेन किया. तो शुरू में 30 पेशेंट्स तक उन्होंने मस्त कंटेन किया. 31st पेशेंट नंबर 31 जो ट्रेंड भी है. सो दिस गाय
वेंट इनटू चर्च, जैसे हमारे वहाँ पे उल्लासनगर में एक जो है हमारी जागरण में चली गई माता जी कि हम तो हाँ सही जी, कर रहे हैं, 1500 लोगों के साथ में बैठ के जय हाँ श्री राम। जागरण में बैठी है ना, और ये चर्च में तो उसको पता था ये पॉजिटिव है, फिर भी चला गया ये चर्च में। भाई ये जीसस की शरण में चला गया कि यही करेंगे, है ना, प्रभु जी करेंगे बेड़ा पार, यीशु जी करेंगे बेड़ा पार, है ना, ठीक है। तो भैया अब उसने स्प्रेड कर दिया, उसका कल्ट भी वैसा था। So this was his, this was what he was like. So this guy spread it to a lot of patients. But हमारे में भी कनिका कपूर है, ये है, तो सही बात है, स्प्रेड के चांसेस तो है। तो इवेंचुअली ये स्ट्रैटेजीज तो चेंज करनी पड़ेंगी, दिस विल चेंज विद टाइम, बट वी शुड वॉच। मुझे लगता है, एंड दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव हार्ड डेटा फॉर इट, इंडिया में थोड़ा सा वेदर जो है ना, व्हाट हैपेंस इज कि साउथ कोरिया या इटली, यहाँ पे एसी के इटली में तो एक तो वी हैड अ हाई चाइनीज लोड in terms of the people who traveled there for summers, Chinese people who were traveling there, northern Italy, which is the richest part, one of the most prosperous part of the Italy, और जहाँ पे फैसिलिटी एक्चुअली यूएस से ज़्यादा है अगर आप पर कैपिटा वेंटिलेटर्स वगैरह ट्रैक करोगे तो there was a very high load at that time, and plus these people are very family oriented, they go and hug each other cases, तो उससे ट्रांसमिशन भी फास्ट हुआ। चाइना, साउथ कोरिया वाज नियर टू चाइना, शुरू में अच्छा कंटेन किया, उनको एक्सपीरियंस था ये सारे एपिडेमिक से, तो दे लर्न फ्रॉम दैट, बट स्टिल लाइक 30 पेशेंट नंबर 31 इट वाज सनकी, दीज पीपल कैन टिल्ट एवरीथिंग्स इन अ डिफरेंट फैशन। उस पर टेस्ट की स्ट्रेटजी से ज्यादा तो आप लॉकडाउन कर दो, जैसे कैलिफोर्निया आज लॉकडाउन में चला गया, even Nagpur, Pune, Mumbai, there's some sort of lockdown. I think Modi has also given an indication towards that only, that this is possible, and we were saying around that. अगर ऐसे लोग करेंगे then obviously we are in trouble. But India में क्या है कि थोड़ा हीट, नॉन एसी इन्वायरमेंट्स हैं, हीट ह्यूमिडिटी है, थोड़ी सी बारिश हो रही है। I hope, I mean, there's a Jang et al. का स्टडी, then उसमें है कि with per degree rise in temperature Celsius, आपका 0.03 से R0 जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाता है, तो सपोज अभी 3.5 है तो 0.4 डाउन चला गया। उसके बाद ह्यूमिडिटी से भी 0.02, ह्यूमिडिटी में तो बहुत वैरी करने का पोटेंशियल है, अभी 20% ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, तो आप 0.02 से आप 20-40 चली गई, तो ऑलमोस्ट ये फिगर हाफ पे कर्टेल हो सकता है। और सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो ये जो है ये करेंगे, तो फिर इससे जो है मुझे एक लगता है, मतलब दिस इज पोटेंशियल। प्लस वी डोंट टच आवर चिल्ड्रन अ लॉट, मतलब उस तरह का कल्चर नहीं है हमारा, ग्रीट करने का कल्चर नहीं है। स्कूल्स तो हमने पहले ही क्लोज कर दिए थे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दिस गवर्नमेंट वाज एपिडेमिक एक्ट को फिर से लाया, लोगों ने बोला क्या ये वाहियात है, बट ये सही था, ये एक्चुअली इसी लोगों के लिए था कि ऐसे लोग निकलेंगे पेशेंट नंबर 31 टाइप के जो इस तरह का ट्रांसमिशन करेंगे। तो ये तो दिस इज अ प्रीटी वैलिड वरी। if these people persist, then obviously people will go into community transmission. तो उस केस में अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है तो क्या करोगे, फिर भी घर में रहना, राइट, दवाई है नहीं, कोशिश करना है। डॉक्टर, आई वुड विश ऑल्सो टेली हेल्थ शुड कम अप इन अ बिग फैशन। आई डोंट नो हाउ डॉक्टर्स शुड बी, कोई यहाँ पे देखो सभी तो पैसे मतलब लगे हुए हैं, बट देयर शुड बी सम मोडालिटी, पीपल शुड हैव एक्सेस टू टेली हेल्थ, पीपल विल आस्क अबाउट थिंग्स, बट कुछ एक्सेस होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरह का चैनल क्रिएट होना चाहिए तो पीपल पैनिक नहीं करें, क्योंकि इफ यू टॉक टू पीपल जो यार होम आइसोलेशन में पड़ा हुआ है, the society has boycotted him, मतलब you must answer people who run away. There was a person in travel history के बाद आए, they have come, जो around a paranoid people, why they here in this society he should live in a hotel for quarantine hotels are designated, why should he stand for 3,000 rupees उसका घर है, इसको ग्रोसरी भी नहीं दो जी, कोई ग्रोसरी करने जाए, कोई घर की मतलब people can get, so that can make you mad, you are already in a sorry state कि यार मैं क्या कराया जो यहाँ फंस गया, that's meme, ठीक है, and then you have this thing, it is blowing up, people are ostracizing you for different reasons, and it is a part of, so society should come to help as well, and main thing is you should isolation is only possible if society supports you। अब आप उसके घर में मेड है, अब वो जो लोग भी हैं वैसे ही जो ट्रैवल करके आया अपनी मेड को बोल रहे हैं कि भैया तुम तो आओ हमारे यहाँ, घर का काम कौन करेगा, इज इट फेयर?
आप उसको कर रहे हो, वो तो ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट्स में रह रही है, शी इज लिविंग इन ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट्स, दिस इज नॉट प्रॉपर. सो दिस इज so we should be more humane. I mean, एक तो ह्यूमेन है, एक ठीक है, थिंग्स अभी हमें फेवर कर रही हैं, बट ह्यूमेन नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे तो ये सब कोई ना विंग बचेगा ना हम बचेंगे, है ना. मैं तो वहां लड़ाई लड़ रहा हूँ भैया, मतलब मैं तो सामने सस्पेक्ट दिख रहा हूँ, तुम इतने पैरानॉइड हो कि नॉर्मल किस मिट्टी के बने हो यार. तो That's true. So, doctor, I just wanted to ask you a follow-up about the heat and humidity question. So, I think it was Shireen Bhan who had quoted Dr. Nichols, who was very confident. And obviously, the study is in the preprint. I think they have given it for peer review and they're hoping for it to be published soon. So, Dr. Nichols was very confident, and when he said that the virus seems to survive the best at 4 degrees centigrade, and it seems to die down at 35 degrees Celsius and above. So, what are your comments on that? And then there was another study. I forgot the name of the study. There were 2 or 3 studies that have come about this. Obviously, they're on based on a certain type of ideology, which they have analyzed the data from the influenza. So, what are your comments on that? And also, there seems to be a difference of opinion in the WHO scientists and what is the American scientists, who the American scientists believe that the aerosolization factor does matter, and when it comes to humidity, it does matter. The humidity will help, stop the transmission, but the WHO scientists seem to disagree. So what happens is, in such a scenario, आजकल जैसे आपने कहा ट्विटर है, ट्विटर पे सारे किस्म के लिंक आते हैं, so people tend to panic and confuse a lot. So where do you stand? What is happening right now? So what is it actually? So can you explain that aspect too? सो हॉट हीट, कुछ लोगों ने क्या किया कि डेली केसेस को प्लॉट किया, सारी सिटीज में जितने डेली केसेस हो रहे थे. आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगा आपको, आप अपने इस शो नोट्स में बाद में जोड़ देना. So what they did was they plotted the number of cases that were happening in cities across various parts of the cities of the world, right? So they found कि टेम्परेचर के साथ, मतलब मैंने जो 0.3 बताया आपको पर डिग्री है ना, 0.03 डाउन जाता है, जो R0 फिगर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रिप्रोडक्शन नंबर, एंड ह्यूमिडिटी के साथ 0.024 जाता है. एक रिग्रेशन इक्वेशन था जो पार्शियली, आई मीन 70% चीजों को एक्सप्लेन करता है. हालांकि ये भी हम करेंगे तो आधा ही जाएगा, R0 1 के नीचे, मतलब एक आदमी एक से ज्यादा को नहीं कर रहा ट्रांसमिट, राइट. R0 अगर 2-3 है तो लोगों की ऑलमोस्ट तिगुना है पोटेंशियल, तो 1 से नीचे होना चाहिए. तो फिर भी 1.5 तो रहेगा ही, मतलब हॉट ह्यूमिडिटी हेल्प करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे अगर आपने इनिशियल लोड बढ़ा दिया कि सारे ट्रैवल कर रहे हैं. फॉर्चुनेटली एयर बैन 22 के बाद हमारा एयर बैन हो गया, इनिशियल लोड नहीं घटा है. इटली में जो क्लासिकल मिस्टेक है, इटली तो अब बहुत चीजें टेस्ट कर रहा है, लेकिन इतना लोड आ गया उसके यहाँ, चाइनीज मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आ गए, उस समय नहीं कंट्रोल हुआ, ना उन्हें पता था, चाइना ने डिक्लेयर नहीं करा था. एंड देन व्हाट विल हैपन इज you will have the load. So if the load, you will have to decrease the load, then you will have to socially distance, you will have to take some precautions. So this is all only possible when you add all things. Heat humidity is a bonus. I mean, obviously it's a non-moderate. Who knows? Okay, April has traditionally been hot, not very humid, but hot. But who knows? I mean, you will have to act, right? So you cannot bet your horse on this. There's, I think personally think there's enough data, because India में the flu season persists till Jan and March, and from the major peak, and then a minor peak comes between July to August. I'll talk about this also. But so what happens is that heat के साथ the flu goes down in April. Now what happens is southern hemisphere में तो फिर क्या होगा, पे कोल्ड शुरू होता है. बिल्कुल, southern hemisphere में कोल्ड स्टार्ट हो जाती है. And then again जुलाई में ह्यूमिडिटी थोड़ा वेदर चेंज होता है, and then it comes back. This is actually a worry, and Imperial College of London has done a modeling around this. उन्होंने बोला कि मिटिगेशन आप कितना भी कर लो, स्पेनिश फ्लू में यही हुआ था, शुरू में तो माइनर पीक आया, दूसरी बार में जो आया उसने खत्म कर दिया दुनिया को. फॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से अभी तब तक ट्रायल्स हो जाएंगे हमारे पास, काफ़ी सारी दवाइयों के ट्रायल्स हो जाएंगे हमारे पास, कुछ क्योर होना चाहिए, शायद वैक्सीन भी कुछ ऐसे आ जाए जो हम ट्राई कर सकें, मतलब वी वुड बाय सम टाइम. दैट इज द बेसिक आइडिया. सो व्हाट हीट एंड ह्यूमिडिटी, इन माय ओपिनियन, जो मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहता है, कुछ फ्लू में स्टडीज हुई हैं और कुछ रिग्रेशन मॉडलिंग हुई, जो एक प्रेडिक्शन स्टडीज होती है, उनको कैजुअलिटी उतना तो क्लासिकली लैब्स में और ह्यूमंस में प्रूव होंगी, बट मेरा आइडिया तो है कि heat and humidity will help, because otherwise it is tough.
I mean, and I'm being serious. I'm not being panicky about it, because socially distance आप कितना भी कर लो, I don't think you will able to exclude all. So luck also must, either our race does or our weather does. क्योंकि अफ्रीका, अच्छा, चाइना में तो बड़े सारे चाइनीज जो है अफ्रीका में भी काम करते हैं, चाइना में तो लिटरली कंपनी बड़े सारे अफ्रीका में, ये है कि अफ्रीका घूमने में कुछ नहीं हो रहा है, और लेकिन हो सकता है अफ्रीका घूमने कम जाते हो, रोम तो सभी घूमने जाते हैं, सभी को इंस्टाग्राम, एवरीवन वांट्स टू click a picture around Rome, so that might be a potential reason, so but I mean, you can do things which you can control, right? So what things you can control? So people are telling that these are fudging data, SARI. मेरे हिसाब से not fudging. I have not seen community transmission. तो ठीक है, मान लो उसका data imperfect है, random sample. What is like 1,000 samples in a big country like India? Not much. But what I should have seen something in community as well. I am not seeing that. कई लोग बोल रहे हैं कि क्या पता वो diabetes के शुगर के ऑलरेडी उसके एस्थमा का पेशेंट था, it might have got in with the asthma patient, it presented an asthma exacerbation, but I'm not even seeing asthma exacerbations die. They should die, or diabetic patient dying because of it. So I have distressful matlab of the thing. People can tell you, assign all the reasons. Some people are telling कि swabbing correctly नहीं हुई. Again, this happens very commonly, and as I already discussed, that samples can be negative in earlier stage, but वो इस stage पे तो positive आ जाने चाहिए थे, because it's a severe respiratory infection. I would currently I would, with some pointers, I would suggest कि ICMR का मोटा conclusion तो सही है कि 15 March के आसपास community transmission was not that much. Some amount of community transmission is definitely happening. We had a patient in Chennai, the barber who traveled all the way from Rampur, who traveled all the way from Delhi to Chennai to get a job, and then he presented to Rajiv Gandhi in some hospital in Chennai. He had symptoms like this. The doctors were allowed to test. They found it was negative. So he has traveled in that train from Rampur for search of a job. So this guy, we are not able to trace contacts, and how the hell in the Rampur barber is going to get, if I have the details right, is going. So there is definitely some amount of community transmission. का classically definition है कि you have large number of cases. Large number WHO define नहीं करता. अच्छा, WHO ने भी एक शैतानी करी है. WHO doesn't want to offend the countries. तो इसने चाइना को, इटली को भी local transmission में रखा है. What does local transmission mean? कि जो imported contacts आए, 100 contacts आए, और उससे जो contacts को हो गया उनके साथ वालों को. तो भैया ऐसा तो नहीं है. इटली में तो हो रहा है कम्युनिटी में ट्रांसमिशन, चाइना में तो हो रहा है, अब यूएस में भी हो रहा है, क्योंकि नो कांटेक्ट एंड यू आर स्टिल गेटिंग इट इन द कम्युनिटी. तो इस कारण से कई लोगों ने पीपल हैव यूज्ड दिस सेमेंटिक एक्सप्लेनेशन कि WHO said this in local transmission is BS bullshit. So there's transmission occurring. So these countries are actually different. China and Italy are different, very different from India as of now. I don't believe we are on the same curve as of now, but things can change. Even a patient number 31 can change things. Then people like Baby Doll or whatever, these guys can change things. Fortunately, I think weather is on our side a bit, and we have more knowledge. Some trials are coming up. We might help. People might try things. Let's see. I mean, I would be watchful about this. Achha, I had one query, doctor. It might be actually very stupid from a medical point of view, but there is this word asymptomatic. Now, asymptomatic की definition क्या है? So, can I be not having sardi, zukam, bukhar, cough, or breathlessness and still carry the virus? I know it sounds like a very stupid question, but I have to ask this question: that asymptomatic की परिभाषा क्या है? जब आप ये medical terms में, when you use the term asymptomatic, does that mean I need to have some kind of a symptom? Or I cannot have any, I can have none of these symptoms and still carry the virus? You can have none of these symptoms and still carry this virus, because initially asymptomatic means that the fever hasn't started, but yet the virus is in you. It will, give some symptoms within few days, but that may be mild. I mean, many people don't notice fever for long, right? They are, exercising, doing things, and this is depends on their immunity as well. So yes, asymptomatic means no
symptoms. What does symptomatic mean? Fever plus either cough or breathlessness. So fever is mandatory. So that is, so if cough or breathlessness ho gaya, wo nahi. And why is this definition important? So let us take this strategy. So this traveler comes to, traveler comes to my society from Netherlands, and suppose he says that the society insists कि इसका जो test कराना ही है. So he said कि I have cough and मेरी सांस फूल रही है. You can, क्योंकि ये चेक भी करना मुश्किल है, तो किसी को भी हो सकता है. No, but fever has to be there, and fever is present in many cases. But 10% cases ऐसे भी हैं जहाँ fever नहीं होगा. But symptomatic, तो asymptomatic में yes, you can carry it, but eventually you will develop some symptoms. अगर सेल्फ रेमिशन नहीं हुआ है तो मतलब खुद ठीक नहीं हो गया तो एसिम्प्टोमेटिक, दैट इज व्हाट पीपल मीन. एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स नेटिवली यूज करते हैं कि वो कैरी तो कर रहे हैं बट उतने सिम्टम्स नहीं, उनको लग रहा है हम ठीक है, चल रहे हैं. सो दिस इज व्हाट 80% लोग एक्चुअली ऐसे ही होंगे एसिम्प्टोमेटिक. 15% लोग बहुत सिम्प्टोमेटिक हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है. 5% एज आई टोल्ड दे विल नीड वेंटिलेटर्स. तो यहाँ पे बात हो रही टेस्ट यहीं पे है, एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को चेक करो. And that is the thing I explained. Why is it, testing asymptomatic contacts is not very useful? Because for obvious reasons, क्योंकि therapy तो उनको भी वही चलनी है. Unless until you are using asymptomatic contacts as a precise social distancing. कई लोग बोलते हैं इसको precision social distancing, कि मैंने चेक किया asymptomatic contact को, वो पॉजिटिव आ गया, वो नेगेटिव आया तो इंतजार किया, 2 दिन के बाद फिर चेक किया उसको, अब पॉजिटिव आया. अच्छा, उस समय पॉजिटिव आ गया तो उसके सारे कॉन्टैक्ट को मैंने ट्रेस किया, उसके सारे घरों में गया. आई वेंट टू ऑल देयर होम्स, द कॉन्टैक्ट ऑफ द होम. सो व्हाट वाज द एडवांटेज इन दिस अप्रोच? यू गेट 2 days ऑफ एडवांटेज, राइट? यू वेंट टू ऑल टू कॉन्टैक्ट्स, एंड तो रिसोर्सेज तो रिक्वायर करेगा ये, है ना, पैनिक भी होगा. क्या ये इज दिस एन एक्सक्यूज टू नॉट टू डू थिंग्स? लोग पूछ रहे हैं कि साउथ कोरिया ने ऐसे सप्रेस किया. नो, बट एसिम्प्टोमेटिक नेगेटिव होगा तो फॉल्स नेगेटिव भी आ रहा है. पीपल आर मेनी सोसाइटी घूमेंगे भी. जब इंडिया में पॉजिटिव लोग ट्रैवल हिस्ट्री के घूम रहे हैं तो ये तो मैनेजमेंट इशू है. दिस इज एक्चुअली नॉट दिस थिंग इज अ स्ट्रैटेजी वाइज इशू. हाउ डू यू हैंडल थिंग्स? एंड दिस इज वेरी डिबेटिंग ऑन ट्विटर और दिस थिंग वोंट डू मच. डॉक्टर्स के हाथ में डिस्क्रिशन होना चाहिए. दे शुड बी अलाउड टू टेस्ट. एल्डरली का होना चाहिए एटिपिकल निमोनिया. ऑब्वियसली वी शुड टेस्ट मोर, but there should be a method in the madness. Got it. Got it, doctor. So now somebody on the live chat, Karan has asked this question. So what is the worst case scenario for India? How long does Dr. Singh think it will take us to get out of this phase 1 of the pandemic? So, okay, Wuhan got, Wuhan, which was not prepared, got it over in around 103 days. I mean, Wuhan still has some cases, China, but they are imported cases, they call it, because they are now coming from newer countries. I mean, people are flying back to China. Some people are saying it's a secondary wave, blah, blah, blah. But I personally think China is over the worst. So it has taken them around 3 months. Now we will be helped by weather a bit. I hope so. Predicting about future is, forecasting is tough, as Yogi Bharat said, especially when it is about future. Then, so I'm not an infectious disease epidemiologist, and I won't go the whole log. They have done different modelings for that. If you are a quant, you might go and read up imperial mitigation and suppression strategies. I don't think audience would tolerate too much of technicality on it. Mitigation is social distancing. Suppression is going and actively testing. There are, disadvantages to both. Mitigation can economic suppression, etc. Suppression is also good for a time, but again, it will recur. So they have, played around with things. If you remember, UK was not, they were saying that the government is doing nothing. It is doing only modeling things. They were, we're not testing people that much. Now they walk around कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो not people will die. But UK में I personally think कि थोड़ा सा weather वगैरह का भी issue होना चाहिए. I mean, again, there's not a very, very solid evidence, but I think personally, because we would have been given the, initially, permeable, India ne started a bit early. The government started a bit early because
we had some epidemic preparation, bans वगैरह सब थोड़ा सा स्क्रीनिंग वगैरह शुरू करी. You remember how much of brouhaha it was there when Trump said in after Jan कि China, traveling from China was, it should be banned, and people said it was racist and xenophobia. So it is politicking around when it was right? Yeah. And वहाँ पे And India actually did it. India did stop all travel from China. So FDA also botched up things there. उन्होंने PCR टेस्ट अपना नहीं, वुहान का नहीं करेंगे, हम अपना उसमें 1.5 महीने लगा दिए. तो सभी कुछ उनकी भी फॉल्ट नहीं है. बट मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि कुछ चीजें इंडियन गवर्नमेंट ने राइट की हैं. वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर भी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, ही रैन अ सक्सेसफुल पल्स पोलियो प्रोग्राम इन इंडिया, दिल्ली में ही स्टार्टेड, व्हिच वाज इम्यूलेटेड ऑल ओवर इंडिया. सो ऐसा नहीं है, मतलब yeah, people are not mindless, but obviously communication is not proper. Data gathering India में proper नहीं है. We can never run a surveillance on a scale of China or even South Korea. I'm convinced. वहाँ पे GPS people यार मोबाइल पर GPS लगा देते हैं, सभी के पास स्मार्ट मीट होता है. यहाँ पे तो हमारी मेड कॉल नहीं करना जानती यार, है ना, मतलब उन्हें बताना पड़ता है, मतलब ये करके. कई एल्डरली नहीं जानते, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर नेचुरल लैंग्वेज. हम सारे अपने काम इंग्लिश के स्मार्टफोन पे करते हैं. somehow इंग्लिश हैज बोथ एडवांटेज, रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं है, स्मार्टफोन उन लोगों को है भी नहीं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट थिंक वी आर पर्सनली एबल टू डू दैट प्रिसीजन सोशल डिस्टेंसिंग. सो वी आर यूजिंग अ ब्लंट हैमर. आई थिंक इट इज okay and appropriate for the time being. If community transmission really occurs, I don't know what will happen. We will get overwhelmed. Somehow might tide over. We are a bit anti-fragile sort of society. I mean, something should help, but test doesn't help. Only when you should treat, test and treat. True. So, doctor, before we wrap things up, because I'm conscious of your time too, so I just want to give you one last chance. So, what would be your last comments to each and every person who's going to listen to this or who's listening to this right now? If आपके last words क्या हैं? What is your suggestion to all of us as people who don't understand this subject? So what are your last comments before we wrap things up? आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? Okay, I missed a few things which you had said. So I was 1 second. I'll take 5 minutes and would like to. No problem. Please take all your time. Clear some myths also, right? So there are some threads on Twitter also, but I would like to talk about them. Go on WHO site, Mythbuster. लेकिन ठीक है, इतना लोग जब they are listening to the podcast, why should they go on WHO site? So still, I would like to explain them in a simplified manner. So एक तो है कि कोरोना वायरस समर में चला जाएगा, हाँ, लेकिन ये भी बात सही है, हॉट हो तो जाएगा, लेकिन कई बार जो है पीक्स जो है स्मॉलर पीक्स आ सकते हैं स्प्रिंग वगैरह में. तो ये बात सही है, बट सो वी शुड बी केयरफुल इन. बट थैंकफुली उस समय वैक्सीन्स विल कम और प्रॉब्ली ड्रग्स विल कम, सो दैट माइट हेल्प. क्या अभी मॉस्किटो से फैलता है? Does it spread by mosquito? No, it doesn't spread by mosquito. The spread is by respiratory droplets, right? Does it spread by pets? No, it doesn't spread by pets. They have, बीच में there was कि चमगादड़ और ये सब, बट इसमें एनिमल सोर्स नहीं मिला, तो इसलिए लोगों ने नॉनवेज भी खाना बंद कर दिया. बट एनी फूड which is properly cooked, there's no harm in this. Okay, so if you hold, then there's a, if you hold breath about for 10 seconds, तो you don't have coronavirus. Man, this is a test for breathlessness. कि ठीक है, आप breathless हो, तो that could be like at stage day 7, right? Till then, you can definitely have coronavirus. So this is a BS test. Please don't. In fact, there should be some action against people who are spreading these rumors. Okay. Then people are telling कि drink lots of water since coronavirus lives in throat. So this thing will go away. Now here, there's not such idea, but people have done actually some trials on gargling with betadine or something like that. In influenza, some results have been 10% reduction or 20% reduction. I mean, in absence of a cure, you can try saline water, gargling water. Harm in gargling if you have that at home, but that might be a placebo, that might be a minor effect. But I always believe, perfect should not be an enemy of the good. If it doesn't harm others, it is okay. You might try. अगर आपको लग रहा है लहसुन पी लेने से सही हो रहा है, जब तक तुम
पूरी सोसाइटी को कन्विंस नहीं करूँ लहसुन खाने से मैं ठीक हो गया और घूम रहा हूँ, तब तक ये ना, ये तो हेलमेट पहनने की तरह है बॉस, है ना, ठीक है, आपने पड़ा खुद को ही मार रहे हो आप, है ना। हाँ, तो पॉइंट ये है कि दिस इज माय व्यू। देन सोशल डिस्टेंसिंग, कई लोग था ओवर रिएक्शन, फॉर्चुनेटली अब तो लोगों का चेंज हो गया है। पहले लोग हाँ सिर्फ पहले if you wear protective equipment a month back in my hospital, people are laughing कि क्यों पहना है, now everyone is wearing, so that is a major change, people are aware. खासकर one person whom most people listen to in India has already spoken, Modi, so now तो एक रिडक्शन है ना। तो ठीक है, कार एक्सीडेंट, टीबी से बहुत सारे मर जाते हैं, ये वो, बस ये बहुत फास्ट फैलता है एंड इट किल्स एल्डरली एंड इट टेक्स वेंटिलेटेड, बहुत लोग होते हैं, दिस इज डिफरेंट बीस्ट। खैर पीपल आर नॉट कंफ्यूज अबाउट दैट। देन है कि घर के सारे डोर नॉब क्लीन कर डालो, डिसइंफेक्ट कर डालो, which is good. I mean, if you are living in your home, जो कहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्टेड पार्टनर या ट्रैवलर जो मान सस्पेक्टेड के साथ अगर आके बैठा है, सपोज आज के एक इंटरव्यू में था, एक डेरेक ओब्रायन का इंटरव्यू था, सो ही हैड पुट ऑन सेल्फ आइसोलेशन बिकॉज देयर वाज एन एमपी ऑफ बीजेपी who visited Kanika Kapoor's show and he was there with him for 2 hours. So the question is, contact of a contact का तो अभी प्रिकॉशन नहीं आया कि दुष्यंत जो है whatever को क्या हुआ, राइट, है ना, जो है तो उसने भी सेल्फ आइसोलेट कर लिया, विच इज अ गुड थिंग। अगर आपको लग रहा है आपने उस घर पे जहाँ पे आके बैठा है उसको आप क्लीन कर सकते हो, डिसइंफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पाया गया है, दिस हैज बीन सीन दैट इट कैन परसिस्ट फॉर आवर्स। कॉपर पे 4 आवर्स रहता है, अदरवाइज अदर सर्फेसिस पे लंबा रहता है, it is persist for long, almost for, so you can clean that stuff, but that is only help if the COVID suspect has been around there, right, है ना, तो वो कर सकते हो, but you cannot be that main transmission, तो social distancing 2 मीटर 1.5 मीटर कम से कम दूर रहो, उससे होगा। Then this thing it was spread by China, America, don't trust. I judge people who make some conspiracy theories. Actually, I judge people, and that is a comment on their intelligence. I don't think China spread this virus, though why would a society kill? They are also, people should trust what is good in others. I mean, this is the only way to do this. And don't get fascinated by your political ideology. If you read Albert Camus' book The Plague, they said that the people who who love ideas are better than who love people are better than people who love ideas. I mean, always care about people. Ultimately, there are people at hand. Don't get fixated on your party, on your opinion. Be willing to change your views, especially when lives are concerned. So this helps a lot. So और there are some other myths कि गार्लिक बनाना वगैरह खाने से सही हो जाएगा, नहीं, ये डेटा नहीं है। गार्गलिंग का तो फिर भी थोड़ा बहुत है। एक है कि नेति करने से you irrigate your sinuses and you get things cured. Not substantial data. You might try. I mean, there's not some substantial data to help this. Then this is some vaccines against pneumonia, etc. will flu will protect you. Maybe they might protect you from pneumonia and flu, but they will not protect you from this thing. In any case, the flu season is going to get over, so they won't help you now. Then other thing is happens only in elderly, doesn't happen in young. No, man. Why were schools closed? Schools were closed because children are potential bioweapon. What happens is they will be the asymptomatic carrier. They will be, and people tend to hug children, to kiss children, so it will get transmitted by. That is why the schools were closed earlier. So this is a fundamental reason. Okay, they might not be that symptomatic. They might not, because the receptors are not that mature. Then other thing was antibiotics effective? No, but there's some evidence that hydroxychloroquine and anti-malarial. There are some trials coming and antivirals. The trials are going on. Obviously, you won't get that prescription from without a doctor, and there's insufficient evidence. You won't be able to handle it for lay people. Please don't try this at home. This is done by seasoned people. So you might have some side effects. So I won't advise that for normal people, unless until you are listening to doctors. Are there specific medicines? Some antiviral medicines have also come. HIV drugs, the people are using them. They have some. So there's a negative RCT, but the viral load is good, reduced good, and some people in India have tried a cure around it. So this is good. I mean,
the overall approach is good, but antiviral medicines have very high success. Anti-HIV does the lopinavir boosted, ritonavir boosted lopinavir has very high toxicity. So I won't recommend it as a prophylaxis for now. Now, other things, I mean, around the same thing. So how effective are thermal scanners? Thermal scanners will not detect, just they might tell your temperature. So if you have a, this thing at home, thermometer at home, you might check your temperature. I already told you the natural history of the disease. It's sore throat rhinitis is not pretty common. So thermal scanner is not a remedy. UV disinfection will kill. No, that is not the way. Okay, so soap and water is as good as hand dryer. What will happen is, but you will have to wash soap many times. Your hands may get swollen in the process due to osmosis, etc. So the good idea is you can keep a sanitizer, but again, so what is as good, but it is a bit unwieldy. Okay, some things happened recently. People were using these sanitizers in cooking. I saw a patient, so there's an alcohol solution they were using, and they burned their hands also. So be careful while you are cooking stuff. No, this happens all the time. I have patients with COPD. They are on oxygen, but they're chronic smokers. So they go around in the bathroom and there's smoke. Now they have the oxygen around, and then they burn their face. They told, and the moment they come out from the bathrooms of the hospital, and then with the burnt face, becoming like all. And they said, "मुझे पता नहीं कैसे मैं गिर गया." I said that I've seen many like you. Why were you smoking? So these things happen all the time. Okay, so these are the main things. Okay, taking a hot bath doesn't prevent this thing unless until you convert your houses to sauna. Sauna equivalent, but now what happened actually in Spanish flu at that time was, this is what the people who lived in tents died more. Out of the tent survived more because of the weather thingy. So there's definitely some role of hot and humidity, maybe, but this is only an adjunct to the measures which we will be taking. So yes, I mean, these are the things which I would like to communicate to the audience. 3 things: control what you can do, home isolation. Hold your breath for some time. Mask, you should, if you are wearing, maybe in stage of community transmission, you should wear properly. Hand rub properly. Don't ostracize those who are in isolation. Try to help them. Be human, right? Help them with isolation. Talk to them. They might be feeling very alone. Everyone. This is isolation is a very bad thing. It shouldn't happen to people, right? To people, okay. So these things are my messages for fighting this talk. Thank you. All right, Doc. So guys, you've heard Dr. Singh here. Please listen to these words very carefully. Take them very seriously. I would recommend, even if to the people who have heard it live, listen to him again. Look, all I can say is that the least we can do for people like Dr. Singh and the thousands of doctors and the health service workers and the government servants who are out there right now, literally sticking their necks on the line, is we can listen to them and follow their instructions. I got the news that there was a doctor in Iran. She literally had an IV drip stuck onto her, and she was positive. She just went on working till she died. There were 6 doctors the other day I saw in Italy who passed away. For what? For us, to take care of us, so that we don't die. They are dying so that we don't die. So the least we can do is, beyond saying thank you, and I genuinely say that, Dr. Singh, and to all the doctors and all the healthcare workers, really thank you from the bottom of my heart, and I'm sure everybody will thank all of you. But please, guys, listen to what he's saying and share this with the maximum amount of people. Not that it gives me clicks, because it saves lives. Let us share this video as much as we can. Tell people to listen to this again and again. Drill this in your damn heads. Don't become like Baby Dawal or Sone Di. वो तो सोने की हो गई, उसने दुनिया पीतल की कर दी है अपने गाने गा गा के. तो ये सत्यानाश में ना पड़े हम.
Please educate people. And Dr. Singh said something very crucial. Let us not be xenophobic. I see a lot of people, trying to be bad to our brothers from the Northeast. Let us help people in isolation. We can help people in isolation while we take precautionary measures at the same time. Look, we are in this game together. The one thing pandemics and, as they say, when shit hits the roof, is we realize that we are all on one team. All the xenophobia, all the divisions, all the identity politics, everything goes out of the roof. Because I'll give you a famous anecdote. Once Ronald Reagan and Mikhail Gorbachev had a very interesting discussion when the Cold War was at its peak. And Ronald Reagan told Mikhail Gorbachev, yo, what if the aliens attack us? Will you guys help us? And Mikhail Gorbachev was like, obviously, man, I'll help you. The aliens are outsiders. Then we are on Team Human. So I think we can look at this virus as that alien that's attacking us. Now, it doesn't matter. It does matter where it originated from. And though we can deal with the geopolitics of it once we contain the virus. But as of now, we got to fight the virus. So once again, Dr. Singh, on behalf of each and every one who's going to watch this podcast and who may not watch this podcast, I want to say thank you from the bottom of my heart. We really appreciate what you guys are doing for us. And I wish you all the health and wellness. And, let's beat this monster as soon as we can. All right, guys, take care. Stay healthy. Please listen to the doctors. And always remember the two keywords: social distancing. Until then, namaste, goodbye, good night.